A few months ago, I had made a video regarding the trend of shared cinematic universes coming to Indian cinema. In that video, the main concern that I had was the pretty evident lack of planning present both in Rohit Shetty's Cop universe and YRF Spy universe. In this video, I'd like to initiate an in-depth discussion about the YRF Spy universe. Tiger series is genuinely a franchise consisting of Ek Tha Tiger, Tiger Zinda Hai and Tiger 3. If you watch War, you would clearly see that it was supposed to be a standalone film. But while making Pathaan, they decided to join Pathaan with War and Tiger franchise. As exciting as it might seem on paper and in concept, it's equally challenging to bring three franchises together that were not initially planned to be together. Like I said in my review of Tiger 3 as well, the story of Tiger 3 is very similar to that of Pathaan. And this brings me to my second concern. I genuinely liked Ek Tha Tiger when I watched it, because even though it was supposed to be a spy thriller, it ended up being a very personal mission for both Tiger and Zoya. And Tiger Zinda Hai is also a unique film because it was a rescue mission. But when you watch War, Pathaan and Tiger 3, there is a theme of threat to the nation in the form of nuclear weapons, bioweapons and again PAL codes or nuclear codes. Now these concepts and themes are nothing new, and personally I wouldn't mind watching all of these in standalone Indian films. But when a shared cinematic universe is brought into the picture, it starts to feel like all of these characters are doing the same thing over and over again. One route we can actually go down is exploring the mindset and philosophies of characters like Pathaan and Kabir, which the little teaser of War 2 promised us at the end of Tiger 3. And in their own movies give them more personal missions rather than the security of the country being at stake. When we see a team of Avengers, we see how each of the characters has a different set of powers as well as different personalities. And it's genuinely fun to watch all of them complement each other's powers. But when your franchise consists of normal, mortal, everyday human beings, all of which are your best agents, I don't really see room for variety in action or storytelling. I might not be able to see it as of right now, and maybe with time YRF will actually blow me away with what they come up, and for that I am genuinely hopeful. But as of right now, this is my stance on the YRF Spy universe. And this brings me to my third point. From what I have heard, Tiger vs Pathaan will be released in 2026 after War 2, which will be released in 2025. Now, I see that the goal here is to make something like Captain America Civil War or maybe something even better. But the amount of character development that we have with Pathaan is not enough to make it something comparable to Captain America Civil War. I see it going down the path of Batman v Superman Dawn of Justice. If we talk about Captain America Civil War, before that film we had 3 Iron Man films, 2 Captain America films and 2 Avengers films. In all of those films we saw the experiences of our heroes. Captain America was hesitant in trusting the government because of what he experienced in Captain America Winter Soldier, and Tony Stark has always been living in the guilt of how many lives he has destroyed because he was once a weapon stealer, and we see why he is on the side of the Sokovia Accords. Hence, when both the characters make their arguments, as an audience, it's tough for us to take sides because we know where these characters are coming from. And that makes a really engaging film. But when we see Pathaan, we cannot help but notice the countless similarities he has with the character of Tiger, both in personality as well as in ideology. He has a conflicting ideology with the character of Kabir from War, and that would be a much more interesting film to watch. As fun as it would be to watch Salman Khan and Shah Rukh Khan go against each other on the big screen, based on the current state of the YRF Spy universe, I don't see those characters clashing in a way that doesn't make the story feel like rushed or half-baked. And that is the biggest concern that I have, trying to create a spectacle without the necessary storytelling or character development. I personally believe that the trend of shared cinematic universe has actually lost its charm. As a film enthusiast who has followed Marvel for around 15 years, I would really like to watch a standalone film which does not end on a cliffhanger, doesn't promise a sequel, or doesn't require me to do tons and tons of homework from other movies and shows. Now, if the plan of YRF is to make 3 or maybe 4 more films with these characters, I would actually be hyped up to see YRF bring all of these actors together against a common villain who is also played by some great actor. But I'm pretty sure that
a company like YRF will not stop there. They would want to keep making other movies in this franchise, and maybe shows and graphic novels and whatnot. And just like Marvel, it might end up becoming too much stuff with too little substance. भाई एनिमल मूवी देखकर मैं एक बात सोच रहा था, जब रणबीर कपूर के साथ लोगों को मार के आता है, उस पे लेटा होता है बेड के ऊपर, सोचो उसमें कबीर सिंह की एंट्री होती, 5 मिनट का रोल था, शायद कपूर गुस्से वाला। रणबीर कपूर बोलता है ये मेरा दोस्त है, इंडिया का बेस्ट सर्जन है, बेस्ट सर्जन है, ये मेरी सर्जरी करेगा। उसके सामने बोलता है पापा को कि पापा ये मेरे, मैं ठीक हूँ, मैं आपको बचा लूंगा, ये ठीक हूँ। बीच में कबीर सिंह का चाल से माता घूमता, गुस्से में बोलता है ब्लडी सर्जन भैंचोद, ऐसे बचा कर बाप को खुद तेरी मरने की हालत हो रही है, पहले खुद को बचा फिर बाप को बचाइयो। तो इतने में उसके पीछे बॉडी गार्ड सबको बोलता, और तुम लोग बंदूक से करो, समझे? इसका दोस्त तुम किसी गली का कुत्ता नहीं, तुम लोगों के कहने पर डर जाओगे तुम्हारी बंदूकें देखकर। भाई सोचो कबीर सिंह को 5 मिनट का कोई डायलॉग लिख दिया होता भाई मूवी के अंदर, वहां वाव वाव करके भाई बंदा आता, क्या माहौल बन जाता। वो सोचो सीनियर सर्जन बन के आता है, सब दोस्त बन के आता, उसके बाद बाप भी कहता तू दो तेरे सारे के सारे दोस्त एक जैसे है क्या, ऐसे गुस्से वाले, क्या मजा आता भाई। कबीर सिंह का 5 मिनट डायलॉग होता, गुस्से वाला एकदम भैंचोद, मजा आता भाई मूवी के अंदर कसम से। शायद ना भाई डायरेक्टर ने सोचा नहीं बात थी, लेकिन सोचना चाहिए था उसको। कबीर सिंह भाई छोटा मोटा कैरेक्टर नहीं है, कबीर सिंह को भी यूज करो ऐसी मूवीज के अंदर, अगर यूज कर सकते हो तो, क्योंकि भाई वो बंदा भी ना कई लोगों का आइडल है। क्या? क्योंकि भाई वो बंदा भी ना कई लोगों का आइडल है। भाई मेरी बात सुन। पहली बात, कबीर सिंह किसी का आइडल नहीं है। तुम जैसों की वजह से अनुपमा चोपड़ा कहती है एनिमल जैसी पिक्चरें मत बनाओ, क्योंकि लोग फिर इसको आइडियलाइज करेंगे, है ना। फिर मैं एनिमल को बेकार फिल्म होने के लिए बोलता हूं तो लोग मुझे गाली बकते हैं कि साले तू अनुपमा चोपड़ा जैसा है। पहली बात, डायरेक्टर ने सोचा होगा, डायरेक्टर ने संदीप रेड्डी वांगा ने सोचा होगा कि जिस एक्टर को मैंने कबीर के बाप के रोल में कास्ट किया था वो इस फिल्म में रणविजय के दादा का रोल प्ले कर रहा है। जिस आदमी को प्रीति छोड़ के आई थी वो इस फिल्म में रणबीर कपूर की फौज में है। तो डायरेक्टर ने सोचा होगा, डायरेक्टर ने ये भी सोचा होगा कि कबीर सिंह और एनिमल दोनों अलग अलग फिल्में हैं। उस फिल्म में वो दारू पी के सर्जरी करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता है, वहां पे कोर्ट कचहरी है, यहाँ कुछ नहीं है। क्लियरली ये दोनों फिल्में अलग अलग यूनिवर्स में सेट हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों इतना ऑब्सेशन है लोगों को अनरिलेटेड फिल्मों को एक दूसरे से जोड़ने में। कबीर सिंह का हम गुस्से वाला डायलॉग दिखा दें तो जो जो हमने उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट देखी है उसकी अपनी पिक्चर में, उसकी बैंड बजा दें हम 1 मिनट में, है ना। यही चाह रहे हो तुम। भाई रहने दो, अलग फिल्मों को अलग फिल्में रहने दो। हर एक फिल्म को एक साथ आने की जरूरत नहीं है। कबीर सिंह है, एनिमल एनिमल है, अलग रहने दो दोनों फिल्मों को। फिर कहोगे अर्जुन रेड्डी को भी ले आओ, है ना। और अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह दोनों लिटरली सेम स्टोरी, सेम लाइफ जी रहे हैं। फालतू के सजेशन